What's up everyone? My name is Arghadeep and welcome to another finance video. Blockchain, cryptocurrency, Bitcoin, Ethereum. For the last couple of years, we hear about this every day, right? Crypto has become too big to fail. चलो ये तो टाइम ही बताएगा. लेकिन क्रिप्टो जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है ब्लॉकचेन, दैट इज जेन्युइनली रेवोल्यूशनरी. बहुत काम का चीज है ब्लॉकचेन. तो आज हम ब्लॉकचेन के बारे में डिस्कस करेंगे. एंड अलॉन्ग विद दिस वीडियो we are starting a brand new series on blockchain and cryptos and the future of the world. So don't forget to subscribe to this channel so that you don't miss out on the amazing contents that we are going to bring that will shape not only the future of India but on the entire freaking world. So without any delay, let's start. तो ब्लॉकचेन है क्या? In simple words, blockchain is a modern digital ledger. Suppose I am the owner of a shop. So I maintain a ledger, a diary write thing, where I write कि supply कहाँ से आया, कितने में आया, किसके पास जा रहा है, कितना quantity बचा हुआ है. I maintain all the thing, all the accounting thing, right? तो blockchain यही चीज है जो digitally होता है, modern होता है. Blockchain is much safer. The ledger of my shop is centralized. It means I can change it whenever I want. I can tamper with it जब भी मेरा मन करे. But blockchain technology is decentralized. इसका मतलब suppose there are 100 persons in the blockchain network. If I want to change it, I alone cannot do that. I have to get majority vote to tamper with the blockchain, to change the data with the blockchain. Right? तो ये है the biggest advantage of a blockchain कि कोई बंदा आके चेंज नहीं कर पाएगा, अकेला चेंज नहीं कर पाएगा. मेजॉरिटी वोट्स पाना पड़ेगा, मोर देन 50%, तभी ब्लॉकचेन के साथ छेड़खानी कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेंसस वोट. तो ये ब्लॉकचेन हाउ इज इट क्रिएटेड? लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ बिटकॉइन, राइट? तो जब एक बिटकॉइन ट्रांजैक्शन होता है, देखिए ब्लॉकचेन 3 चीजों से क्रिएट होता है. ट्रांजैक्शन डिटेल्स और डेटा, हैश एंड प्रीवियस हैश. So the first one of data is like if we take an example of a Bitcoin transaction. So if I am sending 1 Bitcoin from me to you, so data is made of this transaction information like my name and your name and all that. Hash is a digitally generated unique code. It's like an OTP. Or suppose in our Aadhaar card, when we give the fingerprint, we get a unique 12-digit code, right? So hash is a unique code. For every transaction, a unique code is created. So that is called hash. देखिए एक और बात हम लोग क्लियर कर लेते हैं. देखिए सपोज मैंने एक बिटकॉइन ट्रांजैक्शन किया. So for that particular transaction, a block will be created and that block will be comprised of data, hash and previous hash. Now let's say you did a Bitcoin transaction. Then again another block will be created and that block will contain data and hash and the previous hash. Previous hash क्या है? मेरा ब्लॉक का जो हैश है वो आपका ब्लॉक का प्रीवियस हैश हो जाएगा. अब आपके बाद एक और इंसान ने एक बिटकॉइन ट्रांजैक्शन किया, उनका भी एक और ब्लॉक क्रिएट होगा, उनका भी डेटा और हैश क्रिएट होगा और उनका भी प्रीवियस हैश होगा. एक पार्ट है प्रीवियस हैश, वो प्रीवियस हैश क्या होगा? वो आपका ब्लॉक का जो हैश है वो वहां पे जाके स्टोर हो जाएगा प्रीवियस हैश. सो यू आर सीइंग इट्स एन एवर ग्रोइंग चेन. एवरी ब्लॉक इज कनेक्टेड टू वन अनदर. सो इफ यू समहाउ चेंज द डेटा ऑफ वन ब्लॉक, the entire block, the entire data of every single block that has been created after your block will get changed, right? So it's impossible. And another thing is, suppose Bitcoin का नेटवर्क में 100 बंदे हैं, सिर्फ आपके पास ये ब्लॉकचेन का डेटा नहीं रहेगा, वो 100 बंदे के पास ही ब्लॉकचेन का डेटा रहेगा. तो लाइक आपने हैक किया, आपके पास जो डेटा है उसमें आपने चेंज किया, टेम्पर हो गया, मैनिपुलेटेड हो गया. लेकिन वो बाकी जो 99 बंदे, उनका जो ब्लॉकचेन का जो डेटा है उनमें वो टेम्पर नहीं होगा, उनमें वो चेंज नहीं आएगा. सो यू alone cannot change it because your change will not be reflected on the rest of the 99 people that are on the blockchain network. So that is where consensus vote comes in. If you want to change the entire detail of a blockchain, you have to convince more than 50%, and that is a damn difficult job because in the real world there are not only 100 people, there are millions of people. So now you say, how in the world are you going to convince more than 50% of several millions of people? So it's absolutely impossible. And reports say that for a Bitcoin,
for one Bitcoin transaction that a single block is created, right? और वो एक ब्लॉक का डेटा को मैनिपुलेट टेम्पर करने के लिए आपका अराउंड 10 मिनट्स लगेगा। तो आप सोचिए, ऐसे करोड़ों हजारों करोड़ों ब्लॉक है, हजारों करोड़ों ब्लॉक है। If we even consider just 1 crore block, so if one block takes 10 minutes, it will take you hundreds of years, right? Hundreds of years. So it is absolutely impossible. So that is why blockchain is so safe, and the world, as we are observing, is slowly adopting the blockchain technology. The entire billion-dollar cryptocurrency industry is totally based on blockchain. Blockchain are finding its use on various other sectors. Hospitals are using, real estate is using. Even few days ago, we heard the news that Firozabad police will be taking police complaints using blockchain technology. And once again, like any other finance video, I tried to explain it in the most simplest way, in the most simplest language, so that you and I can understand. So if you like this video, subscribe to our channel and share it with your friends and families. And if you are a parent, do share it with your kids, because blockchain is the future and every pupil should know about it. So see you guys in the next video. Until then, peace.